online और ये ऑनलाइन है अब। and this link for our stream. Now I post this link in our group, in our channel. और अब So, ये ऑनलाइन है और इसकी लिंक हम अपने चैनल पे पोस्ट कर रहे हैं। yes, you can check, open the link. चेक कर सकते हैं आप लिंक को ओपन करके। Yes, it's working, yeah? ओके परफेक्ट। Hi to all, hi to all. Good evening. We take more 5 minutes because everyone is Yes. rejoining. So yeah. So hello everyone, welcome to the webinar. This is the most awaited webinar, I think, because everyone was waiting for Igor to do this meeting to activate blockchain places, and everyone, I think, is excited to see you today. Welcome, Igor. Welcome to the Indian webinar, and I hope you can hear me very well. Yes, Amit, everything is perfect. Thank you. Okay, thank you. And we did today very good training session here. So okay, and आज का जो सेशन है वो सेशन है अबाउट हाउ टू एक्टिवेट ब्लॉकचेन प्लेसेस, कैसे ब्लॉकचेन प्लेसेस को एक्टिवेट करना है सिंपल स्टेप्स में, कैसे आप इजीली सर्वर बाय कर सकते हैं, कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे नोड एक्टिवेट कर सकते हैं, सारी प्रोसेस मुझे भी नहीं आता। इस प्रकार से हम आपको समझाएंगे ताकि आप इजीली इसको ऑपरेट कर सकें। बहुत सारे लोगों ने ब्लॉकचेन प्लेसेस वाले पैकेजेस जिसमें ब्लॉकचेन प्लेसेस आपको फ्री मिले हैं और फ्री दिए गए हैं, ये टेक्नोलॉजी आपको आप सभी को मिले हैं। सो दिस वुड बी गेम चेंजिंग फॉर यू, क्योंकि जब से ब्लॉकचेन प्लेसेस शुरू होंगी आप इजीली इसे ले पाएंगे। सो काफी लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और हमने साथ ही साथ इसको ऑनलाइन कर दिया है, लाइव यूट्यूब पे स्ट्रीम हो रहा है। एंड मिस्टर इगोर फ्लैगमैन, आईटी हेड, जो कि प्लैटिनम कॉइन से हैं और हमारे सबके बहुत चहीते, और साथ ही साथ रशिया से लाइव हैं। दिस इज रिकॉर्डिंग और नॉट? Right now, not, but in YouTube it will be available. All what you say, it's already recorded. ओके। सो मैं चाहता हूं कि इनवाइट करें आप मैक्सिमम लोगों को। अगर क्लिक मीटिंग लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो यूट्यूब लिंक है, उसे लोग डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब लिंक चैट्स में अवेलेबल है और यूट्यूब लिंक को हमने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप्स में पोस्ट कर दिया है। मैक्सिमम लोग यूट्यूब लिंक से भी आई थिंक देख रहे होंगे इसको। सो जस्ट यू नीड टू नो वन थिंग, सभी को आप ये फॉरवर्ड करें। It's a question for me. No, no. Okay. So I Invite shared the link in maximum group. इनवाइट Oh, मैक्सिमम पीपल। और ये ग्रुप भी अभी फुल होने वाला है और इनवाइट आपको करना है मैक्सिमम लोगों को। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें, मैक्सिमम लोगों को आप इनवाइट करें और ज्यादा से ज्यादा लोग, हम जितने लोग यहाँ पे होंगे वो लर्न कर पाएंगे, वो सीख पाएंगे कि ब्लॉकचेन प्लेसेस एक्चुअली कैसे एक्टिवेट किया जाता है, कैसे ब्लॉकचेन प्लेसेस में सारी चीजें आप कर सकते हैं, सर्वर बाय कर सकते हैं, नोड से कनेक्ट कर सकते हैं, सारी चीजें। सो यहाँ पे आईटी हेड जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को क्रिएट करने में अपना सबसे बड़ा योगदान दिया है, वो आपको लाइव पूरी प्रोसेस को सिखाएंगे। सो हम और 2 मिनट्स वेट करते हैं और इस वेबिनार को हम स्टार्ट करेंगे। सो जितने लोग नए हैं मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करें, क्योंकि फिर आप ये मत कहिएगा कि हमने आपको प्रोसेस नहीं बताई या आप प्रोसेस जान नहीं पाए।
invite maximum people, जितने ज़्यादा लोग हो सके, maybe 1000, maybe 5000, maybe 10,000 live streams पे YouTube पे कनेक्ट हो सकते हैं। सो सभी को इनवाइट करें, जल्दी से जल्दी लोगों को इनवाइट करें और हम इसे YouTube पे लाइव ऑलरेडी कर चुके हैं। फास्ट ज्वाइन करें सब, ज्वाइन करें फास्ट। अभी आई थिंक हमारे साथ 400 लोग कनेक्टेड हैं क्लिक मीटिंग में और इतने ही कुछ लोग कनेक्टेड हैं यूट्यूब पे, लेकिन हमें ज़्यादा लोग चाहिए क्योंकि ब्लॉकचेन प्लेसेस ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। सो हमें मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करना है। So, Samit, now we एंड इन have 1 minute 400 वी people. स्टार्ट। या Now we are in our room, only in our room, 400 people, and I see 100 in YouTube, यूट्यूब। and it's growing right now, so it's cool. This is a very hot and trending topic for people. No, yeah, because yesterday it was a big update, and I know that everybody has a lot of questions, but now we can solve all the questions and start activate our blockchain places. Okay, perfect. So let us start. Okay, so I welcome Mr. Igor Flagman, who is here with us from Russia, and he's our IT head, great guy, and a very good friend of mine, Mr. Igor Flagman. Thank you for joining us into this webinar, and thank you very much that you took this initiative to teach people about how they can make money through their blockchain places, how they can start earning, how they can activate, and how this process goes on. So मैं यहाँ पे मिस्टर इगोर फ्लैगमैन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और उनका स्वागत करना चाहता हूँ कि वो इस वेबिनार में आए, उन्होंने इस वेबिनार वो इस वेबिनार का हिस्सा बने और साथ ही साथ उन्होंने ये मुहिम उठाई कि वो सभी को ट्रेन करें, वो सबको एजुकेट करें कि कैसे ब्लॉकचेन प्लेसेस काम करती हैं और कैसे इसका प्रॉफिट। थैंक यू वेरी मच इगोर। Thank you, Samit, and hello everybody. And sorry for Zoom for Zoom meeting because yes, it's a little mistake. But now we can work with our YouTube and with our Click meeting room. So let's start. And Samit, thank you for your help, thank you for your support, and for your best translation. Okay, now we have to check our screen sharing, and now you will see the trees. Yes. Is it work? Samit? I cannot see it. Can you see the tree on my desktop? Okay, it's loading. Let's wait. Mhm. Okay, perfect. So you see the trees? Yes, it's my open Wallpaper. Okay. Yeah. Perfect. Okay. So in our back office in platincoin.com, we have a really important page called My Block Places. यहाँ पे हमारे डैशबोर्ड पे platincoin.com पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इसको हम बोलते हैं माय ब्लॉकचेन प्लेसेस। And how we can install our node and activate it. And we have to understand that we have only two steps for activate blockchain places. First, it's और install कैसे हम our एक्टिवेट कर node. सकते हैं, कैसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं? हमारे पास दो स्टेप है ब्लॉकचेन प्लेसेस को एक्टिवेट करने के लिए। यस। So the first step is install our node, and let's start with this first step. और दो सिंपल स्टेप है। पहला स्टेप है इंस्टॉल करना नोड को। आइए हम शुरू करते हैं इस सिंपल स्टेप के साथ। So this is account without any installed node, and now I want to share you our tutorial in our blog. So I know maybe it's so hard for understanding, but now we make it step by step, and it's everything. It will everything clear. और मुझे पता है कि काफी लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा समझना, लोगों के लिए ये थोड़ा आसान नहीं होगा, लेकिन हम इसे स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश करेंगे। So first of all, we need to choose which provider of virtual server will be used by me, by you, but by everyone. और अब हम देखेंगे कौन सा सेलर हम चूज करते हैं
आप और हम कौन सा सेलर चूज कर सकते हैं? I recommend this server, this service like DigitalOcean. It's provider for your virtual servers. ओके, ये हम यहाँ पे डिजिटल ओशियन लेंगे ताकि आपका जो विड्रॉल सर्वर है वो आ सके इस पे। Yes, DigitalOcean it's simply and easy way to create your virtual server and install your node, your own node of Platin Coin. और जो डिजिटल ओशियन है, ये सर्वर जो है, ये आपको मदद करेगा विड्रॉल सर्वर के लिए और ये काफ़ी आसान है। But it's just only one provider. You can choose anything. You can choose all another servers, all another providers like Amazon, Microsoft, Hetzner, or it's a lot of providers with this server. और ये एक सर्वर है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सर्वर है, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट और ऐसे बहुत सारे सर्वर्स हैं जो ऐसे प्रोवाइडर्स हैं जो सर्वर प्रोवाइड करेंगे आपको। आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। So this example with DigitalOcean, and let's start. Imagine you are registered on this company. You are registered on this site, digitalocean.com. And the first step is click Marketplace. ओके, आप रजिस्टर करते हैं डिजिटल ओशन में, तो फर्स्ट स्टेप आपको करना है मार्केट प्लेस पे क्लिक। Yes, Amit, click on Marketplace, and you will see the different icons with different container inside. So we need only one Docker. हम आपको यहाँ पे जैसे आप मार्केट प्लेस पे आएंगे, आपको अलग अलग सर्वर्स दिखेंगे और सारी चीजें दिखेंगी। आपको सिर्फ एक डॉकर चाहिए। So what does it mean? This means this server will be with Docker inside. इस सर्वर में डॉकर होगा अंदर, इसके इस Yeah, सर्वर के अंदर डॉकर होगा। Docker is software, and its software must be installed on this server. And we click Docker and create button. Just create droplet. It's one button click. और डॉकर पे आपको क्लिक करना है, सिर्फ वन बटन क्लिक करना है आपको। And we has redirected the new page with settings. This is a new settings for you for your server. और हम न्यू पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे हमें सेटिंग सेलेक्ट करनी है। ये सेटिंग्स किसके लिए? आपके सर्वर के लिए है। And look, it's easy. Just take the cheapest price because it's absolutely normal for our node. You can choose any plan. You can choose any hardware, yeah, but you can take $5 per month or $10 per month, but it's doesn't matter. It's work with all computers. और आप कोई भी सर्वर चूज कर सकते हैं, $5 का, $10 का, $15 का, ये मैटर नहीं करता। ये सारे कंप्यूटर्स के साथ काम करता है। Okay, let's choose the basic plan. Yeah, it's a basic plan for $5 per month. ये बेसिक प्लान है जहाँ पे सिर्फ $5 पर मंथ चाहिए। And we now the second step it's which region will be used for your virtual server. और ये सेकंड है कि कौन सा रीजन यूज होगा। You can choose any country which you want. हियर इट इज इंडिया आल्सो। Uh, बेंगलोर, दिस इज इंडिया। yeah. You can select this one. Yeah, no problem. और आपको फिर चूज करना है कि कौन से रीजन में आपको सर्वर काम करता हुआ चाहिए। तो आप जैसे यहाँ पे बेंगलोर है तो चूज कर सकते हैं। आप जिस भी सर्वर सर्विस प्रोवाइडर पे जाएंगे उसका उसमें इंडिया का कोई भी सिटी है वो आप चूज कर सकते हैं। No, of course, if you talk about Indians partners, so Bangalore it's more closer, and of course it's more better than Singapore or New York. और अगर हम इंडियन इंडियन पार्टनर्स की बात करें तो बेंगलोर से ज़्यादा नज़दीक है सभी के, सिंगापुर या मलेशिया और किसी और कंट्री से। Okay, select additional options like IPv6.
ओके, और उससे आप एडिशनल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं IPv6। Yes, and the next very important step is creating a new password for access to your private server. और आपको यहाँ पे अपने प्राइवेट सर्वर के एक्सेस के लिए एक पासवर्ड क्रिएट करना है। And it's very important because if you lose your password, you cannot open your your private server. और अगर आप यहाँ पे पासवर्ड नहीं चूज कर पाते और या भूल जाते हैं, तो आप अपने प्राइवेट सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। Now I am create a new password. और अब मैं नया पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ। So yes, it's password requirements all green. Yeah, at least 8 characters, one number and one big, one small. And now, वन कैरेक्टर। yes, it's all very important. Don't forget this password. It's very important. और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक नंबर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर, एक बिग लेटर और एक कैरेक्टर, और 8 डिजिट का या 8 डिजिट है, 8 डिजिट या 8 कैरेक्टर एटलीस्ट होने चाहिए। और ये मत भूलिए कि इस पासवर्ड को आपको सेव करके रखना है, लिख के रखना है, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। So let's change name for our server. हम अपने सर्वर के लिए नाम चेंज करते हैं। Webinar test, I think it's a cool name for our server. वेबिनार टेस्ट मुझे लगता है एक बहुत अच्छा नाम है हमारे सर्वर के लिए। So, and let's start. Let's create this server. Just click for one button, create droplet. और बस अब हम इस सर्वर को खरीदते हैं और क्रिएट करते हैं। बस आपको एक बटन क्लिक करना है। So let's start, click create. और क्रिएट पे क्लिक करते हैं। And no, now look, I have account on DigitalOcean company and I have already server in use. This is my test flagman, yeah. This is for my account in Platin Coin. And now we see how our new server installed. और अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हमारा जो न्यू सर्वर है वो इंस्टॉल होता है। So they want maybe 1, maybe 2, maybe 3 minutes to create this new server, and after when it will be when it was finished, we can use it. और अभी हमें कुछ समय चाहिए, और जैसे ही ये फिनिश होगा हम इसे यूज कर सकते हैं। Okay, wait. This is our progress bar. Yes. And I think और it's आप देख 5. सकते हैं ये हमारा प्रोग्रेस बार है और ये बढ़ता जा रहा है। This is our new server. We are the hackers, guys. और ये अब Oh, हमारा न्यू सर्वर है। it's finished. Yes. Now we have an IP address of our server. और अब हमारे पास आईपी एड्रेस है हमारे सर्वर का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। Okay, the first step is done because we now create a new server and we receive the IP address. This is private. This is only for you. This is only your private server and with this IP address. और ये हमारे लिए, ये हमारा प्राइवेट सर्वर है, ये सिर्फ आपके लिए है। और पहला जो And स्टेप है वो खत्म हो चुका है। okay, now we have a server and we have to install Node with Platin Coin to this server. और अब हमारे पास सर्वर है, अब हमें नोड को इंस्टॉल करना है इस सर्वर में। And how we can do it? We have a server and how we can install Node on this server? It's easy. और अब हम कैसे नोड को इंस्टॉल करें यहाँ पे, बहुत आसान है। अभी मिस्टर इगोर फ्लिनमैन दिखाएंगे। Okay, let's click the button start, get started. क्लिक करते हैं हम बटन को गेट स्टार्टेड। And now I want to show you how you can open the console special for your server and start work with this your private server.
Again, repeat. Okay, Samit, don't look. If you click on your webinar test new, this is our new server, yes. Just look, this is my account, and just click on your server. Just click it. Okay. बस आपको अपने सर्वर पे क्लिक करना है जहाँ पे हमने इस सर्वर का नाम रखा था वेबिनार टेस्ट, बस आप उसको क्लिक कीजिए. Yes, and now we can run the console. और हम फिर कंसोल रन कर सकते हैं. And it's absolutely magic. और ये One click, जादू है. and you enter to your private server immediately. और एक क्लिक करेंगे आप अपने प्राइवेट सर्वर में एंटर कर सकते हैं तुरंत के तुरंत. And now you can run the command from our tutorial page to install your Node. But if you use Node DigitalOcean servers, like maybe you choose the Amazon, maybe you choose the Microsoft, maybe you choose Herzner. So how you can run this console, this terminal, without access to the site? ये अगर इसके बाद सारी चीजें हमारे ट्यूटोरियल्स में हमारे ब्लॉग में है जिसको आप देख सकते हैं. अगर आप Amazon, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट या किसी और से सर्वर लेते हैं तो उसको कैसे कर सकते हैं. So look, if I now I close the one program, yes. Look, if you use the Summit, by the way, which operation system you use? It's Microsoft Windows or it's iOS by Apple? iOS by Apple. So if you use the Apple devices like MacBook or MacBook Air, you can find the terminal in your applications and connect to your server. और अगर आप मैकबुक यूज करते हैं तो आप वहाँ पे अपना सर्वर देख सकते हैं और उसी में ढूंढ सकते हैं अपने सर्वर को. Okay, how I connect to my server from MacBook, from Windows without site? I want to install. I have to install only one simple program. It's Beauty. PUT. Yes, this is a simple program for our console, and how we can install the our how we connect for our server with this simple program. Okay, we run the और Beauty कैसे application. हम कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं PUT एप्लीकेशन को इस सर्वर से, वो दिखाएंगे. It's absolutely like terminal in macOS. In Windows, we have a Beauty. Okay, no problem. We enter the IP address from our server. अब हमें जैसे विंडोज में PUT एप्लीकेशन है तो अब हमें यहाँ पे अपना सर्वर एड्रेस डालना है. Click open button. Click yes. ओपन बटन को क्लिक करना है, यस क्लिक करना है. And we have a new terminal screen. And now, what we done already? Yes, we open the IP address from our server. This one, yes, you can see. और अब हम क्या करेंगे, आईपी एड्रेस को खोलेंगे अपने सर्वर पे. And now this little program start knocking to the door. Okay, server, it's me. Please let me in. और ये जो छोटा सा प्रोग्राम है ये बोलेगा कि मैं सर्वर पे हूँ, मैं अब आना चाहता हूँ अंदर. And we write only one word, root. It's our user. We are the root. We are the owner of this server. So when we press this word root, we have to enter our password from our server.
And server password. Okay. yes, and this is very important because Summit, look, I print something. Yes, I'm printing, but you cannot see it on your terminal. It's absolutely normal. Don't scary. It's absolutely normal when you cannot see the numbers of your password. और मैं लॉगिन आईडी में रूट लिखूंगा और ये मुझसे मांगेगा मेरा सर्वर का पासवर्ड और मुझे अपना सर्वर पासवर्ड डालना है। लेकिन जब आप सर्वर पासवर्ड डालते हैं तो सर्वर पासवर्ड डालते समय बहुत सी बार ऐसा होता है कि हर बार ऐसा होता है कि आप पासवर्ड नहीं देख सकते जो आपने लिखा है, पर ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। And now I enter the password. Now relog in, run our application again. But it's way not required. You can use the console from the server side. It's just how you can enter to your server. Okay, and now we can see absolutely identical information in two different window. It's absolutely identical because it's our server. Look, root webinar test. Root webinar test. This opened inside from DigitalOcean. Yes, this is from DigitalOcean console. And this console from my PC, from my computer. Summit? और आप यहाँ पे डिजिटल ओशन से ये डिजिटल ओशन है और ये इनके पीसी से कर रहे हैं, इनके सर्वर से आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। And now what we have to do right और now? उसके लिए application है। Okay, Summit. Now we have installed a new server. Yes, and what we have to do right now? Can you repeat because Something wrong with connection? can you repeat? There was some problem with connection. Okay, Summit. We have installed the new server. Yes, and we run the console from this server. हमने इंस्टॉल कर दिया न्यू सर्वर और हम कंसोल को इस सर्वर से रन करेंगे। And now we need open our tutorial from our blog. और अब हमें ट्यूटोरियल को ओपन करना है हमारे ब्लॉग पे, हमारा ब्लॉग या प्लेटिन कॉइन ब्लॉग, वहां पे ट्यूटोरियल को ओपन करना है। And we see the one command which very important. Look, if I copy this command, just copy, yes. और यहाँ पे हमें ये जो कॉमन है इसको कॉपी करना है। आप देख सकते हैं ये पूरा डॉकर। Yes. I opened the console. Yeah, I opened the terminal, and paste this command to the terminal, and press one button. और इस टर्मिनल पे ये जो पूरा का पूरा आप देख सकते हैं डॉकर के बाद जो पूरा एड्रेस है ये इन्होंने कॉपी किया, इस यहाँ पे ये पेस्ट कर रहे हैं और टर्मिनल ओपन कर रहे हैं। And when you press enter, you can see the information about your node pulling from Platin Coin node, and you can see complete, and that's all. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपने जैसे एंटर किया, यहाँ पे आप सारी चीज में देख सकते हैं ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है और बस इतना ही। So, Summit, it was hard, or it was it now we understand how we can install and run our node in our server? This is quite simple process, but the people who don't know about buying servers and they will take time to understand because for the people who are not from IT or they don't know about servers, they might find difficult. But you have what you explained was very good and simple process.
Okay, Samit, and we finish only one part, yeah, from activation of our blockchain places. Now we have our server. Now we have installed node on our server, and let's combine our account with our विद blockchain. दिस सर, यस। ओके, ये पहला पार्ट था जिसमें हमने अपने सर्वर को क्रिएट किया। अब हमें नोड को इंस्टॉल करना है जो सेकंड पार्ट में है। उसके लिए अब हमारे जो अकाउंट में ब्लॉकचेन प्लेसेस के सेक्शन है उसमें हम जाएंगे और दोनों प्रोसेस को कंबाइन करेंगे। Okay, when we finish the installation of our node, we go back to our account on DigitalOcean and copy the IP address from our server. Just copy. और यहाँ पे हम वापस आ सकते हैं डिजिटल ओशन में, अपने सर्वर का आईपी एड्रेस कॉपी कर सकते हैं। And now I open my account for test. Yes, this is my test account without any node. And click try again. और Or यहाँ पे हम अपने टेस्ट अकाउंट में आते हैं और क्लिक करते हैं ट्राई अगेन पे। or sync if you do it in first time. Just click और sync सिंक कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। and you can see you can see the congratulations screen because it's really easy and we have updated node to new version and it synchronized it very fast. और अब हमने नोड को न्यू वर्जन पे अपग्रेड कर दिया और ये सिंक्रोनाइजेशन बहुत तेजी गति से होता है। 24 घंटे ये यूजुअली ले सकता है, यहाँ पे जैसे लिखा है। वन मोर क्वेश्चन, दिस अकाउंट इज नॉट वेरीफाइड एंड कैन वी एक्टिवेट द नोड ऑन नॉन वेरीफाइड अकाउंट आल्सो? Yes, no problem. ओके, सो This is आप account नोड for को test. एक्टिवेट कर This is account for test and now he is not verified and without network activity. But for our webinar, I think they can help us. So the people, my question is, the people who don't verify their accounts, can they still activate the node and they can take benefit of blockchain places? They can install Node uh, without any conditions. Now, look, I don't have blockchain places in my account right now. This is Okay. empty account, but I can install Node and synchronize this node with our blockchain network. It's absolutely decentralized and open. Our network open, and everyone who wants install their node can do it without any problems. And if you want to have a node, own node, you can do it. You can install and connect it to our network. We are open for Okay, for perfect. all world. ओके, अगर आपके पास खुद का भी ये टोटली डिसेंट्रलाइज है, अगर आप वेरीफाइड नहीं है तो भी आप अपने नोड को यहाँ पे एक्टिव सिंक्रोनाइज कर सकते हैं और इसके प्रोसेस में 24 घंटा का भी लग सकता है। और अगर आपके पास खुद का नोड है तो भी आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि हम डिसेंट्रलाइज हम ओपन है। And look how many blocks already synchronized. और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने ब्लॉक ऑलरेडी सिंक्रोनाइज हो चुके हैं। This is all blocks in our blockchain. और ये सारे वो ब्लॉक्स हैं हमारे ब्लॉकचेन वाले जो हमारे ब्लॉकचेन में है। And this is how our node already already installed. And if we reload the page, और ये वो नोड्स हैं जो ऑलरेडी सिंक हो चुके हैं और अब हम रीलोड करेंगे पेज को। स्टिल इन प्रोसेस। yes, it's a process. Maybe it's 5, maybe 10, maybe 7 minutes. It depends about power of our server. We choose the cheapest, but it's working, and you can see how fast it's work. Okay, so और Samit, ये डिपेंड करता है टाइम डिपेंड करता है हमारे सर्वर पे। अगर हम स्ट्रॉन्ग सर्वर लेते हैं तो ये जल्दी हो सकता है, लेकिन हम सबसे चीप वाला भी ले सकते हैं, सबसे सस्ता वाला भी ले सकते हैं। काम ये सभी में करेगा।
Of course, the powerful machine can do it more faster, but you have to do it only one. And when you synchronize your node, you do not powerful machine for connection status. It's absolutely only for one time when you start the synchronized node. You need to be with powerful power computer, but for working, it's a basic plan, absolutely normal. For requirements, submit 1 GB operation memory and 25. Connection is sorry. The connection, I think. Please again. For your server, the I think minimal requirements here for hardware. It's one processor, it's 1 GB operation system, and 25 HDD. It's okay. ओके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि 1 गीगाबाइट का सर्वर होना चाहिए और 25 जीबी का एचडीडी होना चाहिए. So, and when this process was finished, you can activate your blockchain places if you have the blockchain places, and you have to do it और every month. और ये प्रोसेस जैसे ही खत्म होती है उसके बाद एक्टिवेट कर सकते हैं आप ब्लॉकचेन प्लेसेस को और ये प्रोसेस आपको हर महीने करनी पड़ेगी. And if you want to see about what's happened on your node right now, you can enter one comment to your Docker. Just और अगर print. आपको देखना है कि आपके सर्वर पे क्या हुआ है तो एक कमेंट लिख सकते हैं आप अपने डॉकर पे. This is simple comment. I will share you this comment after our webinar, when you can see the log from your node in your server. And look, this is your logs from your private node. Just wait, don't worry, it's absolutely normal. Just wait, and when it will be finished, you can press the activate button, and you have to do it every month because you have to be in active status every month to get the profit from blockchain places. और ये आपको बस एक छोटा सा कमेंट करना है जो कमेंट आपको वेबिनार के बाद दे दिया जाएगा. जैसे आप कमेंट करते हैं आप पूरे के पूरे स्टेटस को देख सकते हैं, आप अपने पूरे के पूरे समरी को देख सकते हैं क्या हुआ है और ये चीज आपको हर महीने करनी पड़ेगी क्योंकि आपको एक्टिव रहना पड़ेगा सर्वर पे ब्लॉकचेन प्लेसेस के लिए. Okay, Samit, this was a way how we can install Node without previous installation. Okay, I hope, and maybe you agree with me. Somebody has already tried to install the Node and already run the command maybe on the last week, maybe 2 weeks ago. So how we can do it, how we can update our node and finish the synchronization. कुछ लोगों ने ऑलरेडी इस नोड को एक्टिवेट करके सर्वर बाय करके सारी प्रोसेस की थी, तो अब हम कैसे अपडेट कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं. Okay, Samit, we have two. So look, yeah, we imagine if you install Node, not today, not tomorrow, or not yesterday. Imagine if you tried maybe 1 week ago. So it was absolutely different command to run our node. And now अगर we need एक वीक पहले अगर आपने इसको इंस्टॉल किया था तो उसके उसमें कमेंट वगैरह सारी चीजें डिफरेंट थी. Yesterday we updated this command, we updated our node, and if you try to do right now before previous installation, it will be absolutely faster and quickly. But if you already has a node on your server, you have to update our node.
And how you can do it? Only for your अगर आपने पिछले हफ्ते इसको किया था तो आपके लिए न्यूज़ है कि हमने कल नोड अपडेट किया है और कैसे आप इस नोड को अपडेट कर सकते हैं, कैसे आप चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं? It's only if you previously installed Summit. It's not for new partners. It's not for first time. Only if you already installed Node till since I'm sorry 28th of November. Yeah, after our event in Dubai, when you tried to synchronize in Dubai or before yesterday. देखिए ये नए लोगों के लिए नहीं है, अभी जो बात बताई जा रही है ये सिंक्रोनाइज़ेशन की, ये नए लोगों के लिए नहीं है जो अब करेंगे। जिन्होंने जल्दी कर लिया था, जिन्होंने पहले ही कर लिया था, ये उन लोगों के लिए है ये जो प्रोसेस अभी बताई जाएगी। You have to run only two commands in terminal. Look, if I close the terminal and open it again, आपको cancel. टर्मिनल को क्लोज करना है और इसको वापस ओपन करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। So I can check version of my node in my server. And if you और आप अब install कनेक्शन देख सकते हैं recently, नोड का यहाँ पे सर्वर पे। yes, and now imagine if I have a version of Node 9.1. I have to update it, and I can do it. I can do it. Just enter the command. Oh, it's not a this command. Sorry, this is not a command. अगर आपके पास 9.1 वर्जन आपने सर्वर को एक्टिवेट किया था तो आपको एक कमेंट लिखना है जो यहाँ पे बताया जाएगा और ये कमेंट हम फिर ट्यूटोरियल्स में भी डाल देंगे। Yes, Amit, it was posted yesterday. Yes, you can see this in our channel from Telegram. And these comments only for users who already tried to Already install a activated है। synchronized node before today's webinar. It's only for these users, not to everyone. और जिन लोगों ने पहले ही इंस्टॉल किया था इस वेबिनार के पहले जिन लोगों ने इंस्टॉल करने की कोशिश की थी या सिंक्रोनाइज ऑलरेडी कर दिया था ये उन्हीं के लिए है, ये नए यूजर के लिए नहीं है। So if you're a user who already tried to install our node, just run your terminal and enter the first command like docker rm-f plc node. What does it mean? Rm, it's remove. So the first command, remove all old version from your server. Click ओके द enter. प्रीवियस ओके Click सो यहाँ पे enter. आपको ये कमेंट लिखना है डॉकर rm मतलब रिमूव और फिर ये जो नोट जो आपको कमेंट दिया गया ये आपको क्लिक करना है इस पे। And now I remove all my node from my server. The second command will remove all data from my server. और सेकंड कमेंट सारा डेटा आपके सर्वर से निकाल देगा। Press enter and space for 4 gigabytes was cleaned from my server. और आप बस इसको एंटर कर सकते हैं और 4 गीगाबाइट की जो स्पेस है आपके सर्वर से क्लीन हो गई होगी। And now if I reload the page with my blockchain places page in my back office, maybe it's not immediately, maybe it's not instant, but in 3, maybe 5, maybe 10 minutes, I can see the error with the screen because I removed all data from my server and from this IP address, this And server. it will be resynchronized, right? Yes. It will be no node status. तो यहाँ पे आप देखेंगे जब हमने नोड चेंज किया मतलब नोड के वर्जन को चेंज करने की कोशिश की, पुराना डेटा इरेज कर दिया, तो जो पुराने लोग हैं उनके लिए मतलब जिन्होंने इस वेबिनार से पहले एक्टिवेट कर दिया था, तो उनके लिए
इसको चेंज करना है, तो हमें क्या करना है, सिंपल है। हमें यहाँ पे आप जैसे ही आप अपने सर्वर पे चेंजेस करेंगे, यहाँ पे एरर आएगी, यहाँ पे नो डेटा प्रोसेस होगा और उसके बाद हमें इसको रीसिंक्रोनाइज़ करना रहेगा। But be careful because I mean this is a way only for user who already tried to install. It's not for everyone. It's not for new users. It's only for users who already has installed Node in their servers. और ये नए लोगों के लिए नहीं है, जो अब करेंगे, ये उन लोगों के लिए जो आज से पहले यानी कि 18th दिसंबर से पहले जिन्होंने इस प्रोसेस को किया था। And when we clean our server, we have to run the base command with our new node 9.5. The previous one was 9.1, right? Yes, previous version was 9.1. Current version is 9.5. And we start again the process again in absolutely clean server. It's in absolutely clean HDD. And our node already installed with a new version. So सो जो प्रीवियस वर्जन था वो 9.1 था और ये वाला वर्जन है जो 9.5 है और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको क्लीन कर दिया है। and you cannot if you do it faster, if you do it in one moment, you can see changes in your back office. And one change when when you see it was all blocks will be synchronized, and you can see the active click button. It will be in active status, not like now. Yeah, it's disabled, but it will be active. और आप इसको देख पाएंगे जैसे ये आप प्रोसेस करेंगे आप सारे ब्लॉकचेन प्लेसेस को सिंक्रोनाइज देख पाएंगे और यहाँ पे जो एक्टिव स्टेटस है उस पर क्लिक कर पाएंगे, अभी नहीं लेकिन कुछ समय में। And that's all, Summit. The first what you have to do every month is click on the activate button, and be careful because if you want to take profit from blockchain places, it's paid only on your main wallet. मेन वॉलेट विच इज Yes, बाइंडेड, राइट? yes, it's main wallet and it's combined with your account. और अगर आपको ब्लॉकचेन प्लेसेस की इनकम लेनी है तो ये आपके मेन वॉलेट में ही इनकम आएगी जो आपके ब्लॉकचेन प्लेसेस की इनकम होगी। And simple rule with the blockchain places, only one account can use one IP address. You cannot use one IP ओके address ओके ओके, for different राइट, accounts. ओके। सो एक अकाउंट, अगर एक अकाउंट में आपके एक ब्लॉकचेन प्लेसेस है तो आपको एक एक आईपी एड्रेस यानी कि एक सर्वर लेना पड़ेगा, फिर दूसरे अकाउंट के लिए फिर दूसरा सर्वर लेना पड़ेगा। And every month, for receiving the profit from blockchain places, you should be in active status before distribution. So look, we are waiting for first distribution of blockchain places in 1st January 2022. और आपको इनएक्टिव स्टेटस में रहना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन के पहले और मतलब इनएक्टिव में यानी कि एक्टिव स्टेटस में रहना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन के पहले। अगर आपका स्टेटस एक्टिव नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन के पहले तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं और फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन 1 जनवरी 2022 से होगा। Yes, and if you want to receive on 1st January, in first day of new year, the profit from blockchain places, please be in active status before distribution. बी इनएक्टिव और इनएक्टिव? Be inactive. So you have to be हाँ, active. बी You इनएक्टिव 3 वर्ड्स। have you have to ओके, be सो you should have active status before activation or before distribution summit before 1st of January. यस यस यस। सो अगर आपको 1 जनवरी पे वो पहले दिन पे इनकम लेनी है तो आपको एक्टिव स्टेटस पे रहना पड़ेगा ब्लॉकचेन प्लेसेस की। Now we have 12 days, 13 days, yes, before New Year.
before new 2022 year, and this time special for you, special for your partners. Please install Node, please install servers and activate your blockchain places before 1st January. Because if you want to receive the profit from blockchain places in 1st of January, you should be active. Please be careful. And every month you can activate your blockchain places. और अगर आपको 1 जनवरी को ये प्रॉफिट लेना है तो उसके पहले आपको एक्टिव होना पड़ेगा और हर महीने यही प्रोसेस आपको एक्टिवेट करनी पड़ेगी। हर महीने ये स्टेटस आपको करना पड़ेगा। And look how many active blockchain places already in our blockchain 3003. network. Yes, 3003 blockchain places. If you want to be with these guys, please install and press active button. और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3000 लोग जो हैं ये अपनी ब्लॉकचेन प्लेसेस को एक्टिव कर दिया है इन्होंने। और अगर आपको इन लोगों के साथ रहना है तो आप भी अपने ब्लॉकचेन प्लेसेस को एक्टिव कर दीजिए। Okay, Samit, this is finished tutorial, and now let's see about our blog. But my advice for the first time, please don't worry. In first 2, maybe 1 hour, in first few hours before node installation, because blockchain it's not easy system. And absolutely new node, absolutely new IP address should be checked in blockchain. And of course, you can be in progress maybe a few hours after installation. Just don't worry if your node not synchronize and immediately after when you press the synchronize button. Okay, Samit? सो अगर आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि आप सभी को अगर आप एक्टिवेट करते हैं इसको नोड को और एक्टिव स्टेटस नहीं आता कुछ घंटों तक, डजंट मैटर, डोंट वरी। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, कुछ समय लग सकता है क्योंकि ब्लॉकचेन एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। And that's all, Summit. Now we step by step. और Yes, we made step by step और our. So now I finished the screen sharing. Summit. ओके, हम ये हो चुका है और अब हम स्क्रीन शेयरिंग का बटन क्लोज करेंगे। एक बहुत आई वांट टू talk to Indian community because in India the people are not everyone is a techno freak or they know about servers. So yes, so इंडिया में, हमारे भारत में मुझे पता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये मतलब ऐसा लग रहा होगा कि आपसे 12वीं की परीक्षा ली जा रही है कॉलेज में, एग्जाम के जितना हार्ड है ये, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जब आपने व्हाट्सएप को यूज करना शुरू किया था, आपको किसने सिखाया था? किसी ने नहीं, आप धीरे धीरे सीख गए थे या किसी को देख के सीखे थे या कहीं से ट्यूटोरियल से सीखे थे। हम और आपको कौन सा व्हाट्सएप फेसबुक चलाना आता था? धीरे धीरे हम सीख गए, धीरे धीरे हम इससे भी फ्रेंडली हो गए, तो हम इस सिंपल प्रोसेस से भी फ्रेंडली हो जाएंगे। लेकिन एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये ब्लॉकचेन है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये ब्लॉकचेन है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो जो स्टेप्स लगते हैं वो तो लगेंगे ही। आपके लिए ऐसा नहीं है कि स्टेप्स सिंप्लीफाई हो जाएंगे, जो स्टेप्स लगते हैं वो लगेंगे, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ये हो सकता है कि आपको थोड़ा समय लगे इसको सीखने में, थोड़ा ज्यादा टाइम लगे सीखने में, लेकिन 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप करेंगे, फेल होंगे, करेंगे, सीखेंगे तो वो हो जाएगा। और ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आपने पैसा डाल दिया और आपको ऑटोमेटिक, ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी आपको पैसा बना के दे रही है, टेक्नोलॉजी आपको कॉइन जनरेट करके दे रही है ब्लॉकचेन प्लेसेस की। तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। जो टेक्नोलॉजी की डिमांड है, चाहे वो सर्वर क्रिएट करना हो, चाहे वो नोड इंस्टॉल करना हो, चाहे वो सिंक्रोनाइजेशन करना हो, वो आपको करना पड़ेगा। देखिए, और साथ ही साथ मैं इसके साथ कुछ और वेबिनार्स करूंगा आपके लिए स्पेशली, ताकि आप कैसे, देखिए 2 से 4 बार 5 बार हम वेबिनार रिपीट करेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे। और इस प्रोसेस को 1-2 बार आप रिपीट पे देखेंगे इस वीडियो को,
तो आप और इजीली समझ पाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वीडियो को रिपीट पे देखें। अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ आ रही, रिपीट पे देखें। और हम और वेबिनार्स करेंगे इसके ऊपर, क्वेश्चन आंसर्स के साथ करेंगे। अभी हमारे पास इतना समय नहीं है क्योंकि मिस्टर इगोर फ्लैगमैन का शेड्यूल बहुत बिजी है। तो हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, लेकिन एक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, मैं Yes, yes, yes. इगोर से पूछूंगा। ओके, there is one question. The question is about, do someone needs to keep his account active, like active for blockchain places or not? No, 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 no. Don't mix your activity in network Networking when you and receive yes, bonuses, yes, with blockchain places. For blockchain places, you should be active only with on blockchain places server. activity. Yes, not in network, not in for bonuses. And you can आपको एक activate. चीज समझनी है, आपको नेटवर्क और ब्लॉकचेन बेसिस को मिलाना नहीं है। आपकी आईडी एक्टिव है चाहे इनएक्टिव है, कोई मतलब नहीं है। आपको बस और सिर्फ सर्वर पे एक्टिव रहना है, आपके नोड और ब्लॉकचेन बेसिस पे एक्टिव रहना है। उससे नेटवर्क मार्केटिंग का कोई मतलब नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है। And the next question about plan for $5 per month in DigitalOcean, I see in our chat summit. Yes, if you want to get pro commission from blockchain places, you should have a server. This is for our blockchain network, for our whole world blockchain network. It's our decentralization. Because ये हमारा डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है। तो आपको अगर ब्लॉकचेन बेसिस से जो प्रॉफिट है वो चाहिए, जो इनकम है वो चाहिए, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आपको सर्वर लेना पड़ेगा। और मिनिमम $5 से भी आप सर्वर ले सकते हैं। $5 मतलब इंडिया का 400 रुपए। So the next question about MacBook Air. Yes, in MacBook Air you have to run terminal. Just open the application in MacBook, just Finder, yeah, and run terminal, and you can see the screen with your terminal. Enter your IP address from your node or from your server. Yes, uh, log in as root and pass the password from your server, and you can controlize everything. और मैकबुक में भी आप ऐसे कर सकते हैं। आपको टर्मिनल रन करना है और आपका जो नोड है सर्वर से वो आप डालें, पासवर्ड डालें और आप वहां पे भी रन कर सकते हैं। The next question about how many coins per one block. Yes, you can check it information in your back office. It's available for everyone. And now it's approximately 56 coins per one blockchain place. और ये सारी कितने ब्लॉकचेन प्लेसेस, कितने कॉइन्स एक ब्लॉकचेन प्लेस पे मिलेंगे, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप अपने बैक ऑफिस पे देख सकते हैं। अभी फिलहाल राइट नाउ अभी 53 कॉइन्स पर ब्लॉकचेन प्लेसेस हैं। बट if more people activate their blockchain places, it will get less, right? Yes, yes, yes. लेकिन अगर And ज्यादा if, लोग एक्टिवेट करेंगे अपने ब्लॉकचेन प्लेसेस को, तो ये जो 53 है ये कम हो सकता है। and if you want to get commission every time, every month, you should have a active status. And this very important. Don't lose key from your main wallet, because imagine the situation, Summit. I don't want to say about something bad news, but imagine the situation. You lost your main wallet and you have 100 blockchain places. What you should do in this case? You don't worry. You have every month active status. Yeah, you activate your blockchain places every month. When you lost your key, when you lost your wallet, you can bind your wallet to your account and activate your blockchain places again in next period. So, but it's bad case, yes. But don't worry, keep your case and make a backup and be active every month, and you will get the commission from blockchain places. ओके, सो अगर हम थोड़ी खराब सिचुएशन की भी बात करें, अगर थोड़ी सी खराब सिचुएशन भी होती है और आप असमर्थ हैं
अपने प्राइवेट की को स्टोर करने के लिए, और आपसे प्राइवेट की खो जाती है इन केस, तो हर महीने आपको सिंक्रोनाइज करना है, हर महीने एक्टिव करना है अपने ब्लॉकचेन प्लेसेस को। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका प्राइवेट की खो जाती है और आपके पास 100 50 10 ब्लॉकचेन प्लेसेस हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, न्यू वॉलेट बाइंड कर सकते हैं, और जो न्यू वॉलेट है उसमें आप एक्टिवेट कर सकते हैं नोड को, और वहां पे आप अपनी इनकम ले सकते हैं। The तो next पुराना last तो चला question. जाएगा, लेकिन नया इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यस। Okay, so sorry. The next good question about yes, directly to main wallet. Of course, yes, it's blockchain, and in 1st of January, I'm waiting for this moment. All blockchain places owner, if they had the online or active status, receive the first distribution of commission from blockchain places, and this information about this distribution will be available in your back office in new table on the My Block Places page, and it will only on your main wallet directly without any back offices, without payout request from Platinum. No. It's working on blockchain without site. Just install your node and be ready to receive the commission on your the main wallet directly. और आप अपने मेन वॉलेट में डायरेक्टली ब्लॉकचेन बेसिस की इनकम ले सकते हैं हर महीने, और आपको और ये आप अपने बैक ऑफिस पे देख सकते हैं, जो आपका मेन वॉलेट है जो बाइंड है ऑलरेडी डैशबोर्ड से, वहां पे आप इस इनकम को ले सकते हैं हर महीने। And And Samit, another question about how many blockchain places, and uh, it's not doesn't matter how many blockchain places you have, 1 or 1,000. It doesn't matter. It works with your private server, with your node. Only one node for one account, and it's without any depends of how many blockchain places you have, 1 or 1,000. और आपके एक अकाउंट में कितने ब्लॉकचेन प्लेसेस है वो मैटर नहीं करता। एक ब्लॉकचेन प्लेस होगा तो भी एक सर्वर एक नोड, एक सर्वर का एक नोड चाहिए। 1000 ब्लॉकचेन प्लेसेस हैं तो भी आपको एक सर्वर का एक नोड है वो कनेक्ट करना है, और आपको सारे ब्लॉकचेन प्लेसेस की क्यूमुलेटिव इनकम आपके वॉलेट में आएगी। And guys, be important. You cannot install Node on your iPad or your MacBook or your mobile phone. It's not the same technology. You can use your iPad, you can use your iPhone, you can use your phone for controlize your network, your private server. Mhm. But it should be normal server with absolutely normal hardware with static IP राइट। address. It's not for your mobile phone. It's not for your laptop. No. हाँ, सो किसी का प्रश्न था, तो उसका आंसर ये है। प्रश्न ये था कि क्या हम अपने आईपैड या अपने फ़ोन के आईपी एड्रेस से कर सकते हैं? नहीं। ये एक नॉर्मल सर्वर होना चाहिए, स्टैटिक सर्वर होना चाहिए, स्टैटिक आईपी एड्रेस होना चाहिए, नॉर्मल सर्वर होना चाहिए, और वो आपको कनेक्ट करना है। आपके फ़ोन या आपके मैकबुक या आपके आईपैड वाला नहीं। वहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोलाइज़ेशन अपने हाथ में ले सकते हैं, लेकिन वो वाला नहीं देना आपको। Yes, you can control from now. If you talk about DigitalOcean, just open the site, press console button, and you open that terminal, and you can type something. इन माय मैकबुक और मे बी इन Yeah, माय yeah, 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 आईपैड। yeah. तो आप क्या कर सकते हैं, कंसोल पे क्लिक कर सकते हैं, डिजिटल ओशन पे जाके कंसोल कीजिए, और उसका कंट्रोलाइजेशन आप अपने डिवाइसेस पे ले सकते हैं, लेकिन डिवाइसेस वाला आपको एक नॉर्मल सर्वर होना चाहिए आपके पास। So, Samit, okay, if you have a question, you can ask. Now I ओके। see there a lot of questions with answers already in our group, in our chat. ओके, जहाँ पे जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जिसका आंसर ऑलरेडी दे दिया गया है। तो अगर फिर भी किसी के प्रश्न है, किसी के क्वेश्चंस हैं, तो आप एक लिस्ट प्रिपेयर कीजिए, एक पूरा लिस्ट प्रिपेयर कीजिए और अपने अपलाइन को दें, और फिर आपके क्वेश्चन होंगे, हम वो नेक्स्ट वेबिनार में उस क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आंसर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी, और हम रिपीट आंसर्स नहीं लेंगे। इसका एक ही सॉल्यूशन है, इस यूट्यूब वीडियो को रिपीट पे देखें। अगर आपको वन टाइम में आप नहीं समझ पा रहे, तो रिपीट पे यूट्यूब को वीडियो को देखें ताकि आप समझ सकें। Summit, and let's
let's finalize, yes, our webinar today. Today we installed our node and our servers, and we have two ways how we can run our node. In first way, अब we use आज हमने पूरे वेबिनार किया, इसको समराइज करते हैं। हमारे पास दो रास्ते हैं जिससे हम इस प्रोसेस को कर सकते हैं। yes, the first way, if you are a new member, if you are a new user, if you are a new partner without any node, without any server, you just install, create your server, run one command, and that's all. This is one way. If you already have the node before today's, just use two commands. In first command, you remove your node. Second command, you clean all data. And the third command, you run your node with new version 9.5. और आपको एक चीज समझनी है, अगर आप न्यू यूजर हैं तो आपको जो प्रोसेस बताई है वही करना है। अगर आप ने 18 तारीख के पहले पुराने वर्जन के साथ उसको सिंक्रोनाइज किया था, आपको रिमूव करना है और पिछला डेटा क्लीन करना है और न्यू वर्जन को सिंक्रोनाइज करना है। वो कमेंट लिखना है जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट किया गया है। Okay, Samit. Thank you. ओके, थैंक यू वेरी मच इगोर, एंड आप सभी का भी धन्यवाद। मुझे पता है आप सभी के अभी भी प्रश्न होंगे, लेकिन ये जो प्रश्न है उसका उत्तर इस वेबिनार में दे दिया गया है। अगर आपके फिर भी प्रश्न है तो आप सारे प्रश्नों को लाइन अप करें, अपने अपलाइन को भेजें। आपके जो अपलाइन डायमंड्स है वो मुझे क्वेश्चन भेजेंगे और जो नेक्स्ट वेबिनार हम करेंगे उसमें स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे, क्योंकि मिस्टर इगोर फ्लैगमैन के ऑलरेडी कुछ और मीटिंग लाइन अप हैं तो वो वहां जाएंगे। Thank you very much, Mr. Igor, for this webinar, and I hope everyone will understand this. They will activate as soon as possible, so maximum PLC they can get on first day of 2022. Yes. Thank you, Samit, and thank you. So let's activate your blockchain places, and don't worry if you have some problem. You can ask our support, and they will help you. Thank you. और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सपोर्ट में लिख सकते हैं, support@platingenesis.com, और वहां से आपको इसके उत्तर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वेबिनार में। प्लैटिन कॉइन, द टाइम इज नाउ। The time is now, Samit. Bye bye.